नमस्कार। आज आम गोटे एमतिया टॉपिक उपरे डिस्कशन करिबा जोटा समस्त जन को लाइफ रे केबे ना केबे ता उपरे डिस्कशन करिया को पड़े, ता उपरे भाबिया को पड़े, चिंता करिया को पड़े और सेटा हैला करियर। आम संगे आज अछंती मिस्टर पीके प्रमाणिक जहाँ कर 22 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी करियर कंसल्टेशन गाइडेंस इंटरव्यू टेक्निक्स उपरे तांकर ऑर्गेनाइजेशन फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स आउ तांकर गार्डियन मानू यही सब विषय रे बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी आसची एवं सर बहुत सारा टेलीविजन इंटरव्यूज रे भी आसुचंती जो थे कि से करियर कंसल्टेशन एंड गाइडेंस उपरे कथार्ता होचंती एवं तांकर ओडिसा रो बहुत मेजर पब्लिकेशंस मध्ये अछि जो थे कि से कॉलम लिखुचंती। तेणु सर ऑन बिहाफ ऑफ मेनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। 10th और 12th होची बोर्ड एग्जाम दुटा मेजर बोर्ड एग्जाम सितरे पिलर ऑफ कैरियर डिसाइड हे जाए। इनफैक्ट आई टेल यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th तो फॉलो करंती किंतु 12th रे टिके भूल भाल हे जाए। कारण अछि विल डिस्कस अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट जे पिला मन कोन करियो कथा किंतु मु सबसे प्रथम कहे जे सक्सेस पई किछि शॉर्टकट नाही। स्टूडेंट्स मन को लाइफ इज ओनली वंस यू गेट इट, सो यू प्लीज यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पेरेंट्स मन को भी सपोर्ट करियो कथा, पिला मन को गाइड करियो कथा, सो दैट दे डोंट फॉल इनटू रॉन्ग कंपनी। मतलब बिकॉज कंपेनियन जदि आप ठीक रहिला अपन लाइफ रे बहुत भलो आगु करि परिबे बिकॉज दे बिकम ए ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स माने फर्स्टली मु कहबी कि 10th बोर्ड एग्जाम को आप तो सीरियसली जमते दउछंती, 12th को भी सेमती आप देखंदो। 12th रे टिके फ्रीडम होची, ठीक के पेरेंटल कंट्रोल कम ही जाए, बट आई स्टिल सजेस्ट कि डोंट गेट इनटू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच विल अफेक्ट योर स्टडीज। बिकॉज आप एबे जदि ठीक रे काम करिवे, ठीक रे पाठ पढ़िवे, बिकॉज दैट इज योर वर्क, देन इंटायर लाइफ आप एंजॉय करिवे। सो इट इज बेटर टू वर्क एंड take this particular opportunity for 3-4 years जदि आप ठीक रे पाठ पढ़िवे, the entire life आप मजा करि परिवे। There's a one small story, even Ratan Tata had said कि पहले मेहनत फिर मस्ती। It means आगो आप लेबर करंतु तापर आप मस्ती रे बहुत चांस मिलिबो। ए टाइम रे जदि मस्ती करिवे ताले प्रॉब्लम होबो कि लाइफ रे सारा लाइफ आपको खटिया पड़ियो, मेहनत करियो एंड यू मे नॉट अचीव व्हाट यू वांट। कोन आपन एम्बिशन ता हाई रहले आप सब बड़े देखिए जे आपको ड्राइविंग फोर्स मिलिबो, मोटिवेशन मिलिबो और आप आगो को जीवा पे सब बड़े उद्यम करिवे। सर 10th क्लास परे जो पिला माने बहुत टेंशन रे थांती कि हमें को स्ट्रीम चूज करिवो, तो हमें कोन कोन क्राइटेरिया कंसीडर करिवो 10th परे हमें को स्ट्रीम चूज करिवो बोली, साइंस कॉमर्स की आर्ट्स, तो आपन को मतरे आपन कोन कहिबे हमें को क्राइटेरिया कंसीडर करि परिबे? नहीं, ये बहुत इंपोर्टेंट वाइटल क्वेश्चन सब बड़े से पेरेंट्स वाले भी माइंड रहे, स्टूडेंट्स माइंड सब वही रहुची। आई विल सजेस्ट वन थिंग, द 10th मार्क्स सिस्टम आपको कहिबे कि व्हिच लाइन यू शुड सिलेक्ट, राइट। आप जेतले 10th एग्जाम दउचंती देखुतेबे कि मार्क्स जेतले सब पाउचंती किछि किछि सब्जेक्ट रे आप भलो मार्क्स करथबे, किछि सब्जेक्ट आप फील करथबे कि त मो पे डिफिकल्ट एंड नेचुरली जदि डिफिकल्ट लागोची you may not enjoy that much. So I'll suggest the subjects जो आप enjoy करचंती पाठ पढ़े को भल लगे and you feel that you can comfortably score good marks, then I will suggest them to choose that. किंतु आ गोटे कथा आर्ट्स कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम भितर किछि डिफरेंशिएट करिया कथा नै। नॉर्मली गोटे रहउची कि साइंस स्ट्रीम टा होची डिफिकल्ट, तो जे इंटेलिजेंट पिला जार मार्क्स बेसी रहे but the top same one prefer करंती। It's okay, it's one is suggested also, but at the same time I'll suggest that those who are looking for some arts subject or those who have got interest for literature or something related to that, they should not feel bad about that they are opting for arts. Right. Arts is equally good subject. There are good subjects in that, like history, political science, economics, anthropology, sociology, there's psychology. There are many good subjects which can give you good career also. So whatever you want to achieve, even with arts you can go for it. What is that? You need to have some kind of interest in those subjects, right? Yes. And same like commerce. Commerce is equally very important. Commerce gives you some kind of idea to get into, to become a better entrepreneur,
you can get into accounting, you can become chartered accountant, and there are a number of professions you can choose. यदि आप कॉमर्स नौचंती कॉमर्स नेला परे आप बैंकिंग सिस्टम को जाई परिबे, मैनेजमेंट करि परिबे, अकाउंटिंग सिस्टम करि परिबे, कंपनी सेक्रेटरी. So there are many courses a commerce student can choose from. Right. So in my opinion, trade or stream does not make much difference. It is the kind of interest of the students which makes the difference. Right. तेणु सर इच आम जो जो स्ट्रीम्स उपरे डिस्कशन कलु तापरे जंती आमर रहला साइंस कॉमर्स आर्ट्स तो सेतरे कोन कोन पॉसिबल चॉइसेस ऑफ करियर हमें करि परिबु कोन कोन कोर्सेज हमें सेतरे पढी परिबु ए तीनटा जक स्ट्रीम रे ना. अच्छा ठीक अछि, ए जस्ट कथा चलतरा. आई जस्ट सजेस्टेड आर्ट्स जदि आपण चलते, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्ट्स ओनली. आर्ट्स सपोज ए पिला यदि फील करछि जे मो मैथमेटिक्स कमजोर अछि कि साइंस सब्जेक्ट, बिकॉज आई टेल यू इट इज ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. इट्स नॉट दैट द स्टूडेंट्स जदि आर्ट्स सिलेक्ट करले से मन खराब है तो मु कहबे नहीं. आई सजेस्ट देम कि इफ यू एंजॉय स्टडीइंग आर्ट्स, go for it. They're a good subject and there are a number of good career also. Now let's start with arts once again. Like suppose you want to go for studies, teaching. So arts is one subject which you can go for higher studies, like after your +2 you can go for +3 and then a post graduation, then doctorate, you can do research, you can get PhD in that also and become teacher of professor, something like that first. Secondly, if you want to get into administration, you can also choose for civil services or state public service commission. You can go for it. There are a number of subjects which you can enjoy passing and you can easily pass these exams also. Yes. Now coming back to management courses, like somebody after doing graduation management course bhi apna art student kari paribe. So there's nothing like that. Suppose BBA kala pore MBA bhi kari paribe, MBA kala say number of good companies apna through campus or off campus apna job pai paribe. Right. Apart from that, you want to get into mass communication or journalism or maybe films or animation or something, the fashion designing. There are a number of subjects which a female student can choose from, get into dancing, get into singing. There are n number of professions somebody can choose from. Hotel management is there, travel and tourism. So there's no dearth of career from arts stream also. So students, those who are choosing arts, I'll suggest don't feel bad about it. You first take the serious subjects with interest, study, and you achieve your goal. Now, coming back to commerce now. Commerce, as I said, कि commerce for normally commerce accounting को prefer करते, those who are good in that. But at the same time, commerce is supposed to be one of the like best rewarding streams. माने एटा middle रे कहा जाए, arts नहीं कि science नहीं commerce. So anybody who is interested to make career in commerce can make it either after graduation, like if you do BCom, you can go for management. If you want, after +2, you can try for chartered accountancy. You can go for costing or company secretaryship. And if you also feel interested, general accounting is one. Like for average students, those who are scoring and they feel that they can't compete, so they say feel korchanti ki chartered accountancy tough ho jauchi, they can go for general accounting. And in general accounting also, there is a good number of jobs available. Similarly, suppose jodi nije business kariyako chahochanti, entrepreneur hobako chahochanti, then commerce becomes one of the choicest subjects. Jota loko kahochanti mu commerce student, mu jane ki profit loss kon. So that is the one thing which I suggest ki student chaile seta ko opt kari paribe. And for female, apna dekhbe new train, there are a number of female students opting for commerce. और सी माने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होचंती, कंपनी सेक्रेटरी भी होचंती, बहुत सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी. एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कला परे जब एमबीए कला परे दे गेट इनटू एचआर और फाइनेंस व्हाटएवर सब्जेक्ट दे फील सेतरे कैरियर अछि. आ गोटे कथा हम कहे जे कैरियर कथा पर जत कहउचंती, देयर इज नो डर्थ ऑफ गुड कैरियर. डर्थ प्रॉब्लम होची कोडी वी डोंट ट्राई सीरियसली. और सक्सेस पे किसी शॉर्टकट नहीं. जदि डेडिकेटेड इफेक्ट जो भी लेवल रे रहंतु
गोटे काम जब एज ए स्टूडेंट आप पढ़ुंट यू स्टडी विथ पैशन व्हाट एवर यू डू विथ पैशन आप सक्सेसफुल हेबे प्रॉब्लम कोड होची बिकॉज वी डोंट कंसंट्रेट ऑन दैट एंड वी डोंट कंसिडर एंड फील सक्सेस कम्स इजी नो सक्सेस नेवर कम्स इजी आ किसी शॉर्टकट भी नहीं गोटे छोटियाटा मु एग्जांपल दबाक चाहिए कि स्टूडेंट माने जितने से डाइवर्ट हो जाउछंती विथ ड्यू टू रॉन्ग कंपनी और दे ऑप्ट फॉर सम प्रोफेशन और कोर्सेज से कहा को फॉलो माने विदाउट टचिंग देयर हार्ट दे गोटे डिसाइड कर दउछंती अंडर द प्रेशर ऑफ फ्रेंड्स और पेरेंट्स और पीयर्स और टीचर्स से तरह भूल हो जाए सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ लाइकिंग यू शेयर विथ योर पेरेंट talk to your teachers and openly share that these are the difficulties and difficult I cannot. At the same time, before choosing, make your SWOT analysis. SWOT analysis will give you some idea जो को सब्जेक्ट आपको भल लगे को सब्जेक्ट आपन कमजोर अछि को सब्जेक्ट पढ़ले आप को जाय पर एक एनालिसिस करंदु एक रोड मैप करंदु टाइम टेबल करंदु and stick to that. Success is directly proportionate to the efforts you make. कहया कथा आप सक्सेस केते बडा हेबे जितना आप सेही परिमाण रे जो आप लेबर करछंती आप हम किंतु खाली बही को धरि के पढ़े नै जल्दी यू गेट डीप इनटू दैट द टाइमिंग भी अछि जेम कहले आप टाइम टेबल करे अछि फॉर सक्सेस मेक अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड फॉलो दैट विल हेल्प यू टू हैव लेस स्ट्रेस एग्जाम सिंड्रोम जेटा आपको कहा जाए कि स्ट्रेस बहुत बेसी है जाए एग्जाम टाइम रे एंड देन यू डोंट डू गुड इन एग्जाम सो वंस यू स्टार्ट your plan for your career start early make the routine and start working on that will help you to live a very stressless student life now coming back to the next point the next science now when you go for science आप देखिए कि जदि आप स्टूडेंट्स रो कैटेगराइजेशन करिवे नॉर्मली जदि आप देखिए 30% टॉप स्टूडेंट्स अछंती से प्रेफर करछंती आइदर कॉमर्स और साइंस सेटा ऑब्वियस अछि आ एडमिशन भी सेमते आजकल बहुत डिफिकल्ट हेगला अनटिल यू हैव अ वेरी हाई स्कोर द कट ऑफ मार्क इन मोस्ट ऑफ द गुड कॉलेजेस इट आर डिफिकल्ट हे जाए सो सपोज इफ यू ऑप्ट फॉर गुड कॉलेज then naturally you have to score very high marks. High marks is not easy, that you have to work very hard and with sincere effort you can get it. Now, if you opted for science, getting admission in a very good college or science college, it requires high number of high scoring. Yes. For high scoring, once you got into that, then you have to plan which line you want to go. You want to get into research, you want to get into administration, like opting for civil services, or you want to go for engineering or medical. There are a number of other courses which you can go for it. Suppose agriculture engineering. There's a new trend where in agriculture, India in fact requires agriculture scientists. So those who are opting for science subject can also think about career in agriculture engineering. Right. Like dairy farming, poultry, horticulture. So there are a number of other courses a science student can opt for. Even the girls can opt for. Now, apart from that, general science student can go for CDS like exam. You can go for engineering and architecture engineering. So these are many new avenues where you can get into. Like even engineering, unlike mechanical, electrical, and civil, there are new subjects which have come like robotics, mechatronics. These are all new subjects science students can get into. Like astrophysics. Suppose you can get into such kind of thing, and NASA like organization look for you. Yes. So one more thing I will suggest, always aim for high. Problem कौन पहुँची? We don't make our plan, and even if we make the plan, we don't stick to the planning, and we don't stick to the timetable which we frame. So if you want to become a real successful person, I'll suggest stick to the timetable and always think high about it. Even our last president APJ Kalam Sahab, he has said if you want to become big in the life, think bigger. Yes. Until you think bigger, you have a high ambition, because high ambition becomes a driving force. People motivate करे.
So suppose आपण जति सक्सेसफुल हबको चाहछन्ती आपनको मोटिवेट के करियो either your parents either or some role models or somebody has inspired you like person like Mr. APJ Kalam or even if you say Ratan Tata or Ambani, so they become a driving force if you are looking for career in such kind of field. Of course आजकल sports में भी follow career है. Again like suppose if you want to make your career in sports, say Sachin Tendulkar, Dhoni, they become the role model. So once you have the role model, then they become a driving force for you and they will take you to success. Satyapai कहा जाए कि you think for the stars, even if you don't achieve, you will land on the moon. That's one very important proverb is there कि अपन जति बड़ा भाविबे अपन निश्चय बड़ा करबे, because what you conceive, believe, you can achieve. Right? Once again I repeat, what you conceive means the idea which you have, the bada achi apna idea, and you believe in that and believe in yourself also. Once you believe yourself, आपण देखिए जे आपण थिंकिंग प्रोसेस टाइ चेंज हो जाउछि, आपण फ्रेंड सर्कल टाइ चेंज हो जाउ, आपण वर्किंग रूटीन टाइ चेंज हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस. आपण जदि से तक नै का आपण जिबे आपण हाई एम्बिशन रहला अचीव कंसीव करले, आपण निजो पे बिलीव करले and then you achieve it. So conceive, believe and achieve. These are three important points. So to a student को drive करे. And if you realize your strength or potential earliest it is better. Yes. So जदि आप I am चाहूँ संती, I am suggest everybody कि always him और मोर जितने भी audience अचंती, I'll suggest them कि make your timetable and follow it strictly. That will help you. So these are the three streams we talked about. Career में जहाँ प्रथम कहली, there is no dearth of career or job or opportunities in any of the streams, right? So दर्शक पटनायक आर्ट्स को लेके बालिका शिल्पी इतने दूर गए. So there are number sports को लेके सचिन तेंदुलकर और धोनी वाला player अचंती जी कितने नाम कर चुकी. कोहली is the next one. The people think about it. Even acting, there are number आप देखिए जे decide कर ले से fashion designing, reacting. So whatever you choose, and if you believe that yes, I need that, I want to become that, you will achieve that.